तजिलजी सम्पदा संस्कृति खला बला नुगु पुलागु मे नेवा खया थिथि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला जोजोल्पा जी गायक तथा संगीतकार रुपेश दंगल तिमला थे छंगु ख्वा अले अनौना यो बनिया गाचौ निपु मेजी तो नेवा फिल्ड न न्याकुडु अथौकुने वेक ठन्डाले भट्चा परिवार चपेता लाजौंदु ओ हिसाबमा चाहिँ करासीले फुल टाइम बिमाला जौंदु अन्यथा पहिला केही समय अगाडि चाहिँ अरेन्ज कम्पोज आयो अले रेकर्डिङ आयो थारे इन्टरभ्यू ल्याउन्यो अले प्रोग्राम त छट्नीटा सर्ट उठायो भन्यो उके व्यस्त जुया जुन उठायो जी अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड देखे ठाना हो यो पहिला फर्स्ट अन चाहिँ अन्डरग्राउन्ड ब्यान्ड पहिला दु जिगु उके लय जु हिसाबमा खलायो जुसा 12-13 वर्ष तर मिडिया फिले हो यो चाहिँ जी जब चाहिँ एकदम हनी बनी म वरिष्ठ जो हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ ज्यू यो आतिथ्यले चाहिँ जी जब एल्बम लेख्न उब्लाउने चाहिँ ठुलो मिडिया फिले हो यो चाहिँ 2.5 वर्ष जति त टाइम लगा आ चाहिँ मन त फुक ओया गोर्खेलाउरे क्यापिङ ड्यामला पास्पी ओ टाइम जो भी फुक विदेश होना गुली छमनिम ठन्दु गुली पोखरा मेउ ब्यान्ड न ठाना जाउँदु स्टिल आन भाइ बिना पनि ठाना जाउँदु गुले गन कन्सर्ट टाइप यो प्रोग्राम त अफर होला वोल्की चाहिँ जी चाहिँ भाइ बिना पनि चाहिँ मिक्स याना चाहिँ थाउन्यो ए नाच्नु टु टाइम म नेवा म चाहिँ जिंगाला तो नेवाले वे मलाई जिउ छौ मातृभाषा ख मलाई ओ हिसाबमा चाहिँ एल्बम लेख्यो सन्दर्भले चाहिँ छपु जम्मा 5वटा मेट यो खजी परिणाम एल्बम दिया छौ एल्बम लेख्नुले चाहिँ उके चाहिँ म चाहिँ भाषा यो छपु मिन तेमा यो जिटा चाहिँ मनाउने चाहिँ जिटा छौ लुया होला ख अले वे हिसाबमा चाहिँ जी चाहिँ का छपु मेट तेमा ल ढ्याले चाहिँ उके दुछाको टाइम जी नेवाला निपुजके ख होला एकदम कमे झिनी तर ठुटा सुचारु नाउने जिको इन्ट्रेस्ट दु के भयो खस भाषा हो ठो नेवा भाषाले चाहिँ याना चाहिँ जम्मा चाहिँ 17-18 वटा जति म्याल हुन नेवाले चाहिँ गेजु राछ जिको अनुभव नेवाले चाहिँ जे छौ चाहिँ गे राछ बच्चा पिकअप क्याट अथवा बच्चा ठाकु ठेचो त चाहिँ अच्छा राछ वो जि नेवायो जगत नेवायो जि मोनुटे सेन्सरी जि नेन्यु जुल अले वो खस भाषा यो चाहिँ तामाङ न नेनी जस राई लिम्बु न नेनी नेवा न नेनी फुक जाति त्यसै नेन्यु जुवा चाहिँ खस भाषा चाहिँ बच्चा पिकअप छ कालकी हान मजा पिकअप न हुन्यु खण्डु तर ठो नेवा भाषाले न बालना वदु जि नेवा भाषा यो उठान न जुया जाउँदु प्लस बाबलाउ मिन वया जाउँदु ओ हिसाबमा बिस्तारै बाना लाइट हेजौ तर अरेको जिटा लय जो चाहिँ ठो खस भाषा चाहिँ बच्चा असि जुठे जगा नेवा भाषा चाहिँ ओला पा जो छौ कलाकार जु हिंगाला छौ छु छिटो लाइभ ओनलेला एकदम झैबुस अन क जो रेकर्डेड हाला जिसे टिभी एफएमए निनी व लाइभ जुन वो क्राउड सपोर्ट यायो अनौना वो क्राउड जस बाला दयायो अले अनौना हुटिङ सपोर्ट क्ल्यापिङ फुक वो दैले ए कलाकार राठे जुल्की छु ठेन चुनेगा मने ए जुडा मले नेवाले न जु उखनो जग्गा जी छु थो जी एमसी एन्टरटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड छौ मने यो झले छौ प्रोग्राम याउले जी स्वतन्त्र जिन इन्भाइट आओ हिसाबमा जीवन हो अन्न चौवाले माइक प्रब्लम छु टेक्निकली भले प्रब्लम छ उब्ले न जे छौ फिल छुएन दाछ नेवा भयो मेहाला जी नेवा भाषा यो मेहालले चाहिँ सकिसानो थम्स अप यायो जस ताली बजेना स्वागत यायो छौ दु बाला एकदम रेस्पोन्स बाला तर नेबुसो टाइमलगा थियो छु मातृभाषा यो मेहालले न नेवा फिल हैन जी वो जुन निबु मे लेख्न दु उके चाहिँ तिमला थे छंगु ख्वा यो चाहिँ भरि चाहिँ टिपिकल ढाउला गरेको छौ एकदम मोनोटेस एगा भ्यू बिला ओ हिसाबमा चाहिँ जे चाहिँ भरि चाहिँ खस भाषा यो पप जिउ जेन्डर थियो पप जेन्डर एक जे म्याल्यु थियो अले वो पप टाइप यो जिया अरेन्ज छपु याना चाहिँ यो बनिया गाजो छपु लिखना वो लिखनले चाहिँ भट्छ चाहिँ जिठो ऑडियन्स तो दर्शक बिन पिन्ता अथवा छोटा बिन पिन्ता चाहिँ भट्छ
तो रकिङ टाइप यो सानो छियो तो टिपिकल खी तिमे अथवा फ्लुट सारङ्गी मादल अझ टाइप यो जी नेवारी कल्चर त झल्के टाइप यो चाहिँ मे 10 चाहिँ श्रोताबिन व दर्शकबिन चाहिँ बच्चा काइठे छु अले बच्चा डिफरेन्ट चेन्ज याना चाहिँ जुन पप स्टाइल हो अथवा रकिङ स्टाइल हो बच्चा यसले चाहिँ बच्चा अछि छु म दर्शकबिन चाहिँ बच्चा पचे मजुनी बच्चा चेन वेट चाहिँ जिन सोचेना जुन कि बरु टिपिकल बाजा थे त टिपिकल वर्ड थे त चाहिँ युज एना चाहिँ आउ मिले चाहिँ अर्ना प्रस्तुति बिचाइ नाच्नु जिगु द रुपेश नेवा भाषाले भरि चाहिँ चिने आउ प्लस छौ लके लाउड हाम होला होला फर्स्ट टाइम हालु भरि चाहिँ सकिसा एक गाबिलो दर्शक बिन्ति चाहिँ वे तिमला थे छंगु ख्वा दियो छु चाहिँ जे आला के तिमीला थे छंगु ख्वा गुलिजक बाला तिमीला थे छंगु ख्वा गुलिजक बाला तिमीला थे छंगु ख्वा गुलिजक बाला छन्त खना जिगुनुगा ताले है मला छ गुलिजक बाला छन्त सोसो स्वेमगा छ गुलिजक बाला छन्त सोसो स्वेमगा तिमीला थे छंगु ख्वा गुलिजक बाला थैंक यू तो सिर्जना दे मतलब जी वे ना जाता कि एल्बम में जी जिता मनोन से लगे जलो छापू नेवा भाषा न जी छापू तो खस भाषा एल्बम में दुछेक मा थ मातृभाषा यो रे तैले चाहिँ अले जी तो कृष्ण भक्त मर्जन वेको चाहिँ हङकङगे चोना चोनी अले वेको दाइन चाहिँ नेपाल कोया चोबले चाहिँ छौ खलबल जल छौ प्रोग्राम जिमी नाप्लाबले अले अनोना जितो नेवा मे छपु हाल्यो खूब इन्ट्रेस्ट दया छौंदु जितो लिरिक्स म पाछौ छग हेल्प यामला तैले चाहिँ अले वो कृष्ण भक्त दाइन चाहिँ जिके मे छपु दु संस्कृत ट्राई नासला रे दाबले अले त छौ प्रोग्राम मे सन्दर्भले नाप्लाबले चाहिँ छगु छ तिमीला तेजंग ख्वा हैन हार्मोनियम जिंगल द हार्मोनियम जिंगुले चाहिँ अले एकदमै मने छोए जल द तमे अले ओके जी टो रेकर्ड या जितो टु मे बियाब्यो जी अरेन्ज थ हिसाबमा याना उनमाली त्यो हिसाबमा चाहिँ अले जी वेको केक कोया चाहिँ अले अझै एल्बम भेट तया दर्शक चाहिँ माइना याना बिला तामलका म संगीत ढाइला वो ठीक ठोबी ठीक ढाइ वे गलत टेन्जो फुका संगीत दिउला एकदम बालावे ख प्लाउन प्लाउ हिसाबमा मनोन से निउ खास प्लाउ मेन बाला आवो पनि त न रक टाइप यो अथवा र्याप टाइप यो अथवा भरि चाहिँ पास डिफरेन्ट म्युजिक प्रस्तुत याना वो जेनरेसन अनुसार पायो ग जस्तै झिमा बिन्द आयो मेटेट भरि चाहिँ आज जस्तै शीर्षा हेगु त न रि अरेन्ज रिकम्पोज याना छौ रिकम्पोज मतलब रि रेकर्ड याना चाहिँ मे आवले चाहिँ मावा बिन्द नेंगल की जी भरि चाहिँ एन्शियन्ट टाइप बिन्द नेंगल की चाहिँ छुडायो ठ्याउन मेजिला बरु प्लाउ बाला शीर्षा या हेगु हैन अझ टाइप यो जिनेना जी स्टिल माबा पिन्छन एटा तर आइपी हान युवा तेट चाहिँ प्लाउ जेनरेसन यो वे मेट चाहिँ भरै चाहिँ रेकर्ड याउ मे चाहिँ येको दु हिसाबमा चाहिँ जेनरेसन अनुसार चाहिँ पाइथे जौ गाटो थोबिसेले वला खथे जौ जी नेवायो अझै न जस पछि परे जा जौ थे जौ जस्तै आला आफ्नो राथे जस पहिला मखौख आ चाहिँ जस रत्नव्यवसी जी ठोबा रत्नव्यवसी बा जी एकदम नेना हो यो मजान चाहिँ हार्मोनियम में प्र्याक्टिस नै ना वेको मे वेको त न छौ सामान्य आठा दिन पार्टिसिपेट दिउ अरे नटु फ्लापी कलाकार छ नेवा मेन त नेपाल भाषा यो चाहिँ कलाकार पिन त हनिउ अथवा छौ प्रमोट यापटी ज्याजो चाहिँ छिटो नेवा फिल जगत यो चाहिँ अझ मेटन मेने से कया भिडियो अझ ठोक फुक चाहिँ उठान जुइथे छ हजुर जी निपुमे नेवा भाषा यो निपुमे यानोदु ओ निपुमे यो न जी भिडियो दिगुदु दर्शक चाहिँ बालाउ प्रतिक्रिया न बिउदु अठैनटु खस भाषा यो नेपाली भाषा यो चाहिँ मे योको आशा न भिडियोले चाहिँ 4 वटा लेख्नुदु छपु नक्कली मोरी ढिउटी रिसेन्ट चाहिँ लेख्नुदु रिसेन्ट मतलब के महिना दत वना बालाउ प्रतिक्रिया जाउँदु जस ठीक छ
होला ओभियसली एकदमै अझल कलाकार मौजूद तल्ले अपु जी हिंगा ठाकुर ढाटे ऑडियो चाहिँ लिखना मजी हिंगलो ठौकने चारास भास नेटिव अछिन्दु मलाई ओ हिसाबमा चाहिँ ऑडियो लिखना म्या आयो त भिडियो मयाको चाहिँ प्रचार छौ अछिन्छु जुए मको जु हिंगला थेचो वो कारण चाहिँ ठो भिडियो याउन एकदम जरुरतै दु अले वो दु या कलाकार यो टेउ यो नि होगा दचे लैछु व्यावसायिक तरिका न या फस बाला चारास गिटार टेकेना जो त आज भूपेन बज्र चारे जुल वेकन जो गिटार थाया जोंदु आज जस्तै जिया एरेन्जियाउली चाहिँ जिट मचना जोंदु ठयो ऑडियो देख्दा चाहिँ ठ छेचना या चाहिँ ठम लातो यो एकदम जस आर्थिक रूपमा न सहयोग जा जोंदु उके अलावा मेप न्यू लागि न जी भाइ पिन्यू लागि 4-5 वटा मेला अरेन्ज कम्पोज एउटा जना या हुनु ओ हिसाबमा चाहिँ ठुलो कन्टिन्युअस ब्या न्यू ठ पोक्टो जुइ मला पहिला ठमा क्लास के याटु जुइ मला ठके ट्यालेन्ट दे मला ओ हिसाबमा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा न जिसे ठुलो कया हुन चाहिँ म फुमु फुर्दा वे जिना चाहिँ चपेटा लान्छौँ त्यो ठन्डा लगे एकदमै माफी न मफु फ्यामिली भटी चाहिँ जुली चाहिँ छेटो टाइम बिउ पहिला चाहिँ जे स्टुडियोले वना चाहिँ जे अरेन्ज ए जुली चाहिँ बच्चा टाइम बिट चाहिँ ठाकु आया चाहिँ जे फुल अन टाइम छे ब्याज नदु प्लस बीमा थिएन चुनावला तर छे रेकर्डिङ सरी छे अरेन्ज कम्पोज या जुली चाहिँ आ चाहिँ छे टाइम बितन जिके दुडा टाइम फ्यामिली सपोर्ट बिनाला ठो फिल एवेड होला एकदमै ठाकु चीजका माबा कला न सपोर्ट मै आज ठाउँ या ठाउँ ठन्ठेनी मुक्तेन छु जिता एकदम ह्यापी खुसी लय जुदु सपोर्ट एकदम दुडा संगीत क्षेत्र दियो संगीत व्याख्या जसला सुरु ताल अनेकौं दु मला विभिन्न चीज उस्ताद त्यो विभिन्न परिभाषा दु संगीत बारे जित चाहिँ के जुदा छ ठुछौ ठ्याउ साधन खगी जुन थयो सुख दुःख हरेक चीज चाहिँ थयो संगीत उपाके मे उपाके अथवा संगीत उपाके चाहिँ पोखे उपटि छौ साधन खटे छौ जित चाहिँ पिनी स्वेबले चाहिँ ठो फिले वेबले चाहिँ मलाई ओहो एकदमै बालाउ फिल दानदै चाइल न खनि नेन खनि फुक थोक्ने जुनी तर मखु एकदम स्ट्रगल यामा एकदम ठाकु विषय चीज गर्द पिनी जति सोचे वो मनोपिन्छे मना वो चाहिँ एकदम भिन्न थाहा गर्दो वल्की जिनि सी तर जुन न्यू कमर त वे त सपिन त चाहिँ चुडाइरा छ थ इन्ट्रेस्ट दसा छक वया हान तन्यो अझाउ पाखे वे जुसा ठो फिले प्लाट एमटे थ इन्ट्रेस्ट दु थ म याना किन्यु फु जोस जागर दु ठो फिले न जिउ प्लस मेउ न ज्या छौ जुना जिउ जुसा ठो फिले वे न चाहिँ ठौके ज्ञान दे मला संगीत बारे क्लास के आयो एकदम निडेड का जब क्लास के आयो तब थ पोक्ट न जुइका अले अनौना चाहिँ छुदा छ ठो संगीत खेले चाहिँ वेट सपि मेपि लुत तन्त्र एकदम दुगेटो संगीत खेले चाहिँ म हरेक ठासे दु नेपाल भरि दु जी सायद मलाई तर ठो संगीत खेले ठ न ठो फिले जुजा चाहिँ लुत तन्त्र एकदम दु भिडियो याट ठुल देबमा रेकर्ड याट ठुल देबमा ए ठे फुक्क दायो ठो मनी माइन्ड द यो कुदु अयल चाहिँ सोही मनु लेया चाहिँ आगन पि वन माला न्यू कमर त अले अनौना मेन जित नाचदा न कि थके ज्ञान दे मला अनौना संगीत क्लास के आवाज चाहिँ एकदम अफ इदा एकदम अझै पहिला जी सलिस दै न पहिला न जी छौ प्रोग्राम देखे नाप्ला ना खलबल या ट्रमे चाहिँ वे गन इन्डिजस टेलिभिजन थे दु डेटाले चाहिँ जी बडी चाहिँ नाचदा या परिवारको कारण चाहिँ भर्छ सुयमुना थरे नेवा भाषा यो लागि चाहिँ कलाकार पिन्त एकदम उठान नाचो यो लागि एकको सुबादु प्लस इन्डिजस टेलिभिजन अथवा संगीत खेथेन टु जग मक्की मेउन अझ कलाकार पिन्त डुकेपटी मेउन संगीत खेथेन टु मेउपटी प्रोग्राम त न झका वस चाहिँ जिम्त न योको हपाजुइ थियो एकदम आशा नाचना आतको जिगु थो इन्टरभ्यु छौ सोया चोपी सकमी दाजु किजा तत केपी फुक दर्शक पिन्ता अथवा इन्डिजस टेलिभिजन कयाबी इन्टरभ्यु सोया दिउ पिन्ता सकिस्तान सुबादु अले थो जिटा ठाउँ थो जति न ख ठन इन्टरभ्यु लागि जिटा खलबलया लागि शैलेश दाई अनौना थो होल युनिट अफ
इन्डिजस टेलिभिजन वो अले ठो संगीत ख यो लागि चाहिँ एकदम दुनु गलन चाहिँ धन्यवाद सुबादु नेवा बालक मो साना आको नि हो लागि जी अटेम बिहान टेचो होला वे दाया जी निगु शब्द ठने कोचाकी भी यको सुबादु धन्यवाद नमस्ते